जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है। यहाँ तुम्हारा आपुड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो कुर्सी बैठा, हाथ डाल चित्र दिखाया। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं कहा कहो, मेरे 12 बज गए, फिर तुम 4 बजे आ जाना। तो नहीं गुरुजी 1-2 मिनट और लगेंगे। फिर निकाला, सर ये क्या कर रहा है? उसे दिखता बलेगर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान के ही रूप में आते। मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है गुरु जी, मेरे तो हजारों रूप है। तो उसे यूं करके मेरे को देखता रहा। मैंने कहा तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? नहीं गुरुजी हिंदू, पक्का हिंदू। हिंदू तो है। मैंने कहा तुम कुछ बात करनी? हाँ गुरुजी, एक सेकंड। निकला। तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने से छूट के साध्या से आया? कहाँ रहता है? कैसा? मैं रायपुर में रहता हूँ। तो मैं रायपुर में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, या तो आगरा में या सादरा में, तो तुम रायपुर में कैसे आया? क्योंकि आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटल की गड़बड़ तेरी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कहने गुरुजी ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसे सुनूंगा? गुरुजी क्या है कि आपको क्या बताऊं गुरुजी? कुछ बात कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? तो फिर निकला दिया कि गुरुजी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं तो कह दे, आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। ये बात है, तुमसे मजबूत हो क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं गुरुजी, मगर मैं आपको कह देता हूँ। 15 मिनट हो गए, कह दूंगा। आपने कोई प्रेम किया है गुरुजी किसी से? ऐसा शिष्य पहली बार आया ऐसा पूछने के, सीधा गुरुजी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन पूरा किया है। बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत करो गुरुजी। मैं जो पूछ रहा हूँ कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल 2 टूक बताऊँ। वैसे मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा कैसा, तुम क्या पूछना चाहते हो? आप 2 टूक, शर्माइए मत, सच्चाई हो, मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ। आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी प्रेम किया? तो मैं क्या के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठेका है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, नहीं किया होगा, कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरुजी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी ही प्रेमी का दिल जान सकता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। तो मेरे से दर्द बोल, पहले दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द, इतना है, कुछ मालूम पड़े। कितने मैंने इतना सा दर्द लिया होगा जिंदगी में, तो साहब इतना दर्द भोग रहा होगा। अब मालूम नहीं तेरे दर्द तक मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, मगर चलेंगे। आप ये पहले ये बताइए तो मैं अपनी समस्या बताऊं। देखिए मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं। कि करते होता शिष्य पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या थाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहा है? कि कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ जी। ठीक है ईसा मसीह का फोटो हो गया इसके पास। तो गुरुजी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरुजी। ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं। वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं। इसमें तो फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है। नहीं आप मजाक में समझिए गुरुजी, प्लीज आप मजाक में समझिए, मैं मजाक समझ ही नहीं रहा हूँ। मैंने जिंदगी में गुरुजी प्रेम किया, लेकिन तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया यार, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या? क्या आप पुष्पा को जानते हैं? मैंने कहा जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूँ उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है, और कोई पुष्पा को नदी का नाम भी नहीं, गंगा होता तो नदी का नाम। गंगा को गंगा जानते हो? तो मैं कहता हाँ गंगा हरिद्वार में।
कोई यमुना को कह रहे यमुना जानते भाई यमुना वहां, पुष्पा तो कोई नहीं, पुष्प तो है क्या? नहीं पुष्प नहीं गुरुजी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूं। तो मैं कहा मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो मैं कहा तू मुझे प्यार करता, मैं कैसे पहचानूंगा भैया? तुम रहता कहाँ है? मैं हापुड़ में रहता हूँ। मैं तो हापुड़ में आया नहीं, ये तो गड़बड़ है गुरुजी। आप आता मैं दिखा था आपको गुरुजी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वही खड़े रहते। उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरुजी, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो हिल करके चढ़ यहाँ तक आ गया गुरुजी। अब तो क्या है गुरुजी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था, वो कभी बोली नहीं जिंदगी में, आज तो बोली नहीं गुरुजी मुझसे, मैं ही ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरुजी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरुजी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, ऐसा कोई आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल तो पढ़ी है। ये फोटो आप देखिए, मुझे फोटो दिखाई नहीं बात दिखा के फिर हमने आंखों से लगाया। भाई अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत हुई नहीं, गलत हुई बातचीत, वो सबसे बात करती, मुझसे बात नहीं करती, रहती मेरे पड़ोस में सामने रहती। आप हाँ भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। जिंदगी से आधा घंटे हो गया, दिमाग खराब होते होते, तो ये सारा दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी है कि उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता, ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं होता तो वो बोले नहीं तो लाके, मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना हुआ और कुछ ढूंढ करके नीचे बेहोश धड़ाम, कुछ ढूंढ के अलग खुद गिर गए। नाटक है। अब देखिए तो मुंह से झाग आ रहे हो, आदमी का सारा पागल, मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुछ ही हिली, पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? मैं तो हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। कौन सी पुष्पा? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा अभी तक, इसकी जेब में फोटो है, इसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था इतना सा, बिल्कुल दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। मैं कहा 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे धड़कता रहेगा, कोई जरूर नहीं साहब, इसी से पेश में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया साहब, उसको जूता सुंगाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं है। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आपने, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लाया, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे, शिष्य को बुलाया। मैंने कहा भाई ये अब शिष्य कैसे बताऊं मैं क्या? मैंने कहा भाई बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया। गुरु जी आप 12 बजे मत मिला करिए। मैं नहीं मिलेंगे, आइंदा से ध्यान रखेंगे, 12 बजे जो आते हैं कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहले वो देखा नहीं कि 12 बजे दिमाग खराब होता है, घर में देखा नहीं, इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाकर होश आया उसको, होश आती पुष्पा पुष्पा बस चलो मैं चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरुजी आप बताओ आप क्या करें? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए पैदा हूँ। वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है उदाहरण दिया आपको। ये संबंध होते हैं, और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। The deepest love is between two lovers. The same close bond must exist between a guru and a disciple, between a devotee and God. If one of the two has promised to meet at 3 o'clock and does not turn up, then the other should feel uneasy, worried and impatient. It was about 7 to 8 years back that I was sitting in my house at Jodhpur. It was midsummer and very hot. A young man about 23 to 24 years old from Hapur came to meet me. He was handsome and well dressed. He came to me and said, "May I sit down?" I asked him to do so. He sat down on a chair and took out a photograph from his pocket. He said to me, "I want to say something." "Be quick," I said. "It is already 12 in the noon and it would be better if you come back at 4 in the evening." "No, please Guruji.
It shall take only a few minutes. And saying these words, he again took out the photograph, looked at it, and placed it back in his pocket. I said to myself, what is he trying to do? He seems to be from a well-to-do family. But why is he acting so strangely? Just as God appears in several forms before common folks, similarly in my life, disciples have turned up in different varied guises. In your life, there may be only one God, the Guru, but in my life, I have seen so many epithets of him in the form of my disciples. I asked him, are you a Christian? No, Guruji, he said, I am a Hindu. Well, fine, you are a Hindu, but what do you want to say to me? Guruji, just 1 second, he said, and again took out the photograph, looked at it, and replaced it. Have you escaped from a mental asylum in Shadara? Where are you from? I asked him. I live in Hapur, Guruji. But there is no mental asylum in Hapur. There are asylums in Agra and Shadara. Then how come you are from Hapur? Guruji, you think I am mad? I said, well, the way you are behaving, anyone will think that you are mentally disbalanced and have escaped from an asylum. No, Guruji, this is not true. Please listen to what I have to say. How can I, when you don't tell me anything? Well, Guruji, the thing is that, Guruji, please don't be offended. I want to tell you something. It had become too much, but I controlled myself and said, speak up, don't hesitate. Guruji, I just hope you won't feel offended. Come on now, why shall I feel offended? If you abuse me, I shall at the most slap you, but I shall not be offended. I shall just slap you, that's all. You may be young, but I am in every way stronger than you. Guruji, that does not matter. Okay, let me tell you everything. You have already wasted 15 minutes, I said with mock anger. Have you ever loved anyone, Guruji? Anyone? Anytime? I said, you are the first disciple who is asking such a question. Nevertheless, let me tell you, I have loved my gurus and all the gods. This is not what I am talking about, Guruji, he said. I am asking you something quite different. You are not able to get what I am saying. Again he took out the photo. I got a hint what he was talking about. Still I said, what do you want to tell me? He said, please tell me clearly, Guruji. Don't hesitate or feel shy. I won't tell anybody. Your secret shall remain safe with me. Have you ever loved anyone? Why should I tell you? I said to him, I am not bound to tell anything to you. Life is so long, I may or may not have loved someone. But why do you ask? Guruji, I am asking you because only a lover can realize the plight of another. You can't understand, Guruji. You don't know what love is, and you can't know. I said to him, forget about me. Tell me how deep is your pain. I may have experienced only slight pain in my life, and God knows how big your pain is. I am not even sure if I can reach the depth of your pain. No, Guruji, he said, first reply to my question so that I can present my problem before you. Well, if you insist, I have never loved anyone the way you have. If I had, my disciples would have sent me to prison. I have never done any such thing. Now tell me what you want to say. Guruji, I am in love with someone. I said, well, this is nothing new. All Indians have only one motive in life, to love. And when they fail in love, they come to their gurus
which is the second stage. You have just entered this second stage. Guruji, please don't make fun of me. I am not at all making fun, I said. Guruji, I have fallen in love. I said, you have achieved a great accomplishment indeed, which no one else could have done. But you did it, and the whole of India, rather the whole world feels proud of you. So what? Guruji, do you know Pushpa? I said, as far as I remember, there is no one named Pushpa living anywhere in my neighborhood. Pushpa is also not the name of any river. If you had said Ganga, then I would have told you that Ganga is a river flowing through Haridwar. If you had said Yamuna, I would have told you that it is in Delhi. Pushpa means a flower. But Pushpa, I don't know anything about this name. Not Pushpa Guruji, Pushpa. I am talking about Pushpa. Well, I don't know any Pushpa. If you want to tell me something about her, go on. Guruji, Pushpa is the girl whom I love. If you come with me to Hapur, I shall show where she lives, and on seeing her, you won't move from the place. You shall go on seeing her, and you won't be able to leave Hapur. But if this is so, how come you are here? I said to him, well, Guruji, I love her so much. I keep staring at her daily, but she has never even spoken to me. I keep looking at her, but she does not care a bit about me. Guruji, please do something. Use your yantras and mantras and make her come and say to me that she loves me. I have heard that you know how to use yantras and mantras. I have also read your books and the magazine you bring out. Guruji, just look at this photograph. Saying this, he took out the photo once again and touched it to his eyes. You must have talked to her, I said, without looking at the photo. Guruji, this is the problem, that she has never talked to me, he said. She lives in my neighborhood, just next to my house, but she does not talk to me. Please, Guruji, promise that you shall help in our union. I said to myself, half an hour has been wasted in his gibberish talks. This is quite common in love and is nothing new. He is just another lover in the category of Laila Majnu and Romeo Juliet. To him I said, look, I cannot help you in meeting her. I have not opened a bureau to do such work. And I had hardly spoken these words when he fell down unconscious from his chair. I thought that he was fainting, but when I stooped to look at him, I saw him frothing from the mouth. I said to myself, what a fool he is, he shall create trouble for everyone. I sprinkled some water on his face, but nothing happened. My wife, who had probably heard the crashing of the chair, came running and said, what happened? I said, well, nothing has happened. Pushpa has not come, hence he... She looked inquiringly at me. Who is Pushpa? She asked. I said, he has a photo of her in his pocket. I have not even seen it. I took out the photograph from his pocket. It was a photo of a girl taken from quite a distance. I put it back into his breast pocket lest his heartbeat stopped. I thought that it would be better if the photograph remained near his heart, for then it would keep beating. Maybe it worked as a pacemaker for him. 1 hour passed. We tried everything, made him smell a shoe, put some chili powder into his nostrils, but nothing happened and he remained unconscious. I was worried that it might turn into a police case and the police might believe that I had done something to him, or that he became unconscious because I gave him something to drink. I took him outside to the terrace which was cooler and called my disciples.
I told them that he had become unconscious due to the oppressive summer heat. One of the disciples said, Guruji, from now on, please don't meet anyone after 1 o'clock in the noon. I said, fine, I shall take care in future. But how could I know that he would experience an attack of insanity after 12 o'clock? Around 4 o'clock in the evening, he regained consciousness, and as soon as he opened his eyes, he cried out, Pushpa, Pushpa. In a few moments, he got up, and I said to him, don't worry, you are fine. No, Guruji, first tell me, what will you do for me? I said, don't worry, I will help you. I am here only to help you. I was afraid lest he again went into a swoon. Hence I said, I shall myself accompany you to Hapur. I shall myself bring her before you. Don't you worry, just get well soon. I have narrated this incident to tell you what actually is the relation between two lovers like. And if you form such a bond with God, you shall become great like Mira, Kabir, Sur, Raidas, and you shall achieve divine enlightenment. If you develop such closeness to the Guru, then the Guru shall always be present in your soul, guiding you and teaching you.